अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, इन दिस पार्ट वी विल सी कि हम अपने जिरा का अकाउंट कैसे सेट कर सकते हैं और अपनी जिरा की वर्क स्पेस में लॉग इन कैसे कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमें अपने ब्राउज़र को ओपन करना है एंड ब्राउज़र में वी हैव टू सर्च फॉर जिरा सॉफ्टवेयर। अब जैसे ही जिरा सॉफ्टवेयर लिखोगे तो जो सबसे पहला लिंक आपको आएगा दैट वुड बी फ्रॉम atlassian.com। अपने उसको ओपन करना है क्योंकि जिरा एटलेजियन का एक प्रोडक्ट है। तो जिरा यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले हमारे पास एटलेजियन का एक अकाउंट होना चाहिए। सो जब आप इसको क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शंस आएंगे, साइन अप विद गूगल और साइन अप विद इन ईमेल। तो क्योंकि मैं ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुकी हूँ अपनी ईमेल, तो मेरे पास ये ईमेल यहाँ पे आ रही है और अब मुझे अपनी साइट का नेम देना है। सो साइट का नेम इज बेसिकली योर वर्क स्पेस नेम फॉर जिरा। तो हम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। सो लेट्स गिव डेमो वर्क स्पेस। इफ इट इज अवेलेबल तो ये मुझे मिल जाएगी, अदरवाइज मुझे नो इट्स ऑलरेडी टेकन, तो मुझे कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। लेट्स टाइप डेमो वर्क स्पेस प्रोजेक्ट। तो बेसिकली यू कैन सी कि जो फ्री अब हमारे पास पैकेज है जेरा का, उसके अंदर हमें एटलेजियन सपोर्ट करता है अप टू 10 यूजर्स इन द फ्री प्लान। आप 10 यूजर्स तक की टीम को मैनेज कर सकते हो अपने डैशबोर्ड के ऊपर। आपको 2 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा, आपको कम्युनिटी सपोर्ट मिलेगी, और इनफैक्ट इसके लिए आपको कोई क्रेडिट कार्ड की इनिशियल क्रेडेंशियल्स भी एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। सो इट इज़ अ वेरी वंडरफुल एंड अ वेरी कन्वीनियंट टूल फॉर यूज एज अ बिगिनर, and in fact it is used by many multinational companies in their daily work projects. So अपना साइट का नेम देने के बाद हम लोग एग्री पे क्लिक करेंगे एंड इन विद इन सम टाइम हमारी वर्क स्पेस सेटअप होना स्टार्ट हो जाएगी। जब तक इसको लोड करते हैं, we can wait for some time until it is setting up our workspace. So within some time हमारी loading complete हो जाएगी and now we are on this page. So I will select I am new to Jira, as we are in this tutorial we are covering the basic beginner level features of Jira. So we'll select I'm new to Jira. I'm setting for my software team. We can skip these questions. My team is new to agile methodologies. Yes. We spend our time working on features. Okay, I'm skipping the rest of the question and you can set up according to your priorities. So अब यहाँ पे हमें अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, पहला प्रोजेक्ट। सो आई विल नेम माय प्रोजेक्ट। So let's say we are creating a project for an e-commerce project. So let's name it e-commerce project. Okay, after that we'll click on create. Okay, हम लोग यहाँ पे अपने different tools, as we discussed in the previous tutorial, that Jira is very extensible and it can be integrated with different platforms including Slack, GitHub, Microsoft Teams, GitLab, Google Sheets. But for now on, I am skipping these options और इसको हम आगे यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। So now you can see कि हमारा एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। I'm skipping this tour for now on, but as a beginner, you can explore many other features of Jira platform. So our first project is created with Kanban, which is like Kanban board project. But here you can see our first landing page on Jira platform. So in the next tutorial, we will see that how we can create multiple projects and set up our team members in this platform.